Hello everyone. So I have come with the questions of probability chapter from the NCERT book. Okay. So let's start. So question number 1 of probability chapter is complete the following statements. Number 1, the probability of an event E plus probability of the event not E always equals to, we know that probability of E plus probability of not E means bar, is always equals to 1. So the answer is 1. Second number, the probability of an event that cannot happen is, such an event is called cannot happen, will be impossible event. So the probability which cannot happen, probability क्या है, नहीं होने का 0 है probability, and the probability is called impossible event. Event is called the impossible event बोलते हैं. Number 3, the probability of an event that is certain to happen, such an event, certain to happen, certain event, और सर्टेन इवेंट बोल सकते हैं हम लोग, श्योर इवेंट बोल सकते हैं, जो श्योर होगा ही होगा. सो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ऑलवेज 1, एंड सच इवेंट इज कॉल्ड द श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट. ओके. 4 number, the sum of the probabilities of all elementary events of an experiment is, sum of the probabilities of all elementary event. Elementary means if I throw a dice, अगर मैं dice throw करती हूँ तो what is the probability of getting 1, क्या हो जाएगा 1/6. probability of getting 2, that is also 1/6, 2 एक बार ही आएगा. probability of getting 3 number 1/6, of getting probability of getting 4 number, that is also 1/6. कितने हैं वैसे, 5 नंबर का 1/6, 6 नंबर का 1/6, कितने हो गए. नाउ इफ आई से व्हाट इज द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम 6 प्लस ऊपर में क्या होगा मेरा 1 + 1 + 1 ऑर्डर 6 टाइम्स, दैट इज 6/6, that is 6/6. So it is 1. Sum of all probability of elementary, ये सबको क्या बोलेंगे, elementary events. Now number 5, the probability of an event is greater than or equal to dash and less than or equal to. We have already studied that probability of any event is equal to 0 or less than, greater than 0, that is equal to 1 or less than 1. 1 होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए. ओके, डन. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो next question is, which of the following experiments have equally likely outcomes? Equally likely, इसका मतलब क्या है, equally likely outcomes means ऐसा probability जिसका outcomes will be equal, जैसे कि probability of getting, if I throw a dice, same example I will get. Okay, so what is the probability of getting 2, the number 2, the answer will be 1/6, total outcomes by 2 एक बार आएगा. Same, what is the probability of getting 3, कितना बार आएगा, एक बार ही आएगा. These are the equally likely outcomes means 1 आएगा 1, इसका कोई रीज़न नहीं है कि क्यों आएगा, क्या है, कुछ नहीं. 1 आएगा तो 1 एक बार है तो आएगा, तो इट इज़ कन्फर्म है. नाउ इफ आई से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम likely outcomes में. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर,
अगर इवन नंबर बोलते हो क्या है मेरा 2 4 6 तो कितने आ गए 3/6। सेम ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 3 5 दैट इज ऑल्सो 3/6। तो ये क्या हो गया इक्वली लाइकली आउटकम्स। सो एक्सप्लेन मी फर्स्ट नंबर a driver attempts to start a car, the car starts or does not start, is it equally likely? Means car start होगा और not start, start or not start. So there are many reasons, इसके बहुत सारे reasons है, this is also many reasons. Start बहुत सारे रीज़न है स्टार्ट के, मीन्स टोटल आउटकम क्या हो जाएंगे स्टार्ट नॉट स्टार्ट के कुछ होंगे, एंड नॉट स्टार्ट का क्या होगा बहुत सारे, क्यों स्टार्ट नहीं होगा बहुत सारे रीजन है। यहाँ पर भी क्यों स्टार्ट क्यों होगा बहुत सारे रीजन है। दैट इज़ नॉट फिक्स्ड नहीं है कि इसी वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा है। सो नॉट फिक्स, सो इट इज़ नॉट लाइकली, इट कैन बी मोर, इट कैन बी लेस, इट विल नॉट बी इक्वल। ओके, सो इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। सेकेंड नंबर, a player attempts to shoot a basketball, she shoots or misses the shot, same thing. Many reasons can be possible for this, so it is also not possible. Number 3 में क्या है देखो, a trial is made to answer true false question, the answer is correct, right or wrong, एक ही बार right हो सकता है और एक ही बार wrong हो सकता है। yes, equally likely outcomes. Number 4, a baby is on boy or girl, ये भी same possibilities. So this third number and fourth number is the equally likely outcomes. Next question. Why is tossing a coin considered to be a fair way to deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? Means tossing of coin को क्यों fair लिया जाता है? Because tossing of coin, two outcomes are there. Because there are two outcomes, दो ही आउटकम्स है हेड और टेल। जितने भी हम एक्सपेरिमेंट ले लेंगे, ये वाला टॉसिंग कॉइन वाला ऐसा आउटकम्स है, कॉइन टॉस वाला ऐसा इवेंट है जो कि हमारा हेड आएगा या टेल आएगा। सो जो भी खेलेंगे दे कैन से इजीली आइदर हेड या आई विल प्ले और टेल और दे विल प्ले लाइक दिस। सो दे आर फिक्स्ड हेड और टेल। एंड वन मोर थिंग, दिस कैनॉट बी मीन्स क्या है ना, इसमें कोई दे कैनॉट चीट और एनीथिंग अनप्रेडिक्टेबल ना, विच विल कम वी डोंट नो दैट विच विल कम। सो इट इज़ अ करेक्ट वे ऑफ चूजिंग दिस, विच वन विल कम दे विल अकॉर्डिंग टू दैट they will play. Okay, next question. Question number 4, which of the following cannot be the probability of an event 2/3 का आंसर क्या होगा 0 point something, means it is greater than 0. Okay, then it is ग्रेटर देन 0 है। नाउ ऑप्शन बी दैट -1.5, ये तो नेगेटिव हो गया, दैट इज लेस देन 0, इट इज़ लेस देन 0. ओके, नाउ 15% इज 15/100, इट इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0, 0.15 ना ग्रेटर देन 0, एंड 0.7 इज ऑल्सो 7/10, दैट इज ऑल्सो 0.7 greater than 0. So this all are probability, this is not option B. Next question, if P of E equals to 0.05, what is the probability of not E? Probability of E plus probability of not E क्या है 1, we know already. So probability of E क्या बोला है 0.05 plus probability of not E we have to find out. Not E is denoted by bar like this 1. So probability of not E क्या हो जाएगा मेरा 1 minus 0.05, that is 0.95. Yes or no? Okay. So next question is, a bag contains lemon flavored candies,
एक बैग में क्या गया, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। एक कैंडी वो निकाली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल गेट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। ऑरेंज आएगा उसका क्या, नाउ अ बैग दैट कंटेन्स ओनली लेमन, उसमें ऑरेंज तो है ही नहीं, सो इसमें क्या आ जाएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी क्या होगा, 0, नहीं है तो 0 ही। बाई अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, सो यहाँ पर कुछ ना कुछ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जितने कैंडीज होंगे उतने नंबर ऑफ कैंडीज, दैट इज नंबर ऑफ कैंडीज हैं, तो 0 बाई दिस विल बी 0 ओनली, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट, दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। नाउ नंबर 2, एंड लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी मीन्स टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, 1 एंड द फेवरेबल आउटकम कितना निकाली, 1, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड क्या हो जाएगा, 1/1 दैट इज 1, ठीक है। सो क्या हो गया, ये श्योर और सर्टेन इवेंट मीन्स होगा ही होगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. It is given that in a group of 3 students, probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the student have the same birthday? Okay. So total possible outcome are 3 students. कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल 3। क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द 2 स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स not having same birthday, not having the same birthday means probability of not का क्या करते हैं, ई बार इक्वल्स टू 0.992, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ the 2 children having students having the same birthday, not having same birthday, e, not e, having of same birthday, e, that is we know that probability of having the same birthday and probability of having not the same birthday is 1, तो यहाँ पर क्या बोला है, probability of having the same birthday is 1 minus p of e bar, that is 1 minus 0. क्या हो जाएगा, 0.992, that is 89090, this is also 0.08, okay, this is the option. Next question, 8 number. A bag contains 3 red balls, 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? Means हमारे बैग में कितने बॉल्स हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे हमारा, 3 रेड बॉल्स प्लस 5 ब्लैक बॉल्स इज इक्वल्स टू 8 टोटल बैग बॉल्स, ओके, 8 balls are there. Now what is the probability that the ball drawn is number 1? It should be red, रेड होना ही चाहिए। सो टोटल पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स निकालेंगे, व्हाट इज फेवरेबल आउटकम ऑफ दिस इवेंट, रेड बॉल्स, हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर, देयर आर 3 रेड बॉल्स, देयर आर 3 रेड बॉल्स, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज 3 इक्वल्स टू 3/8. And what is the second number, what is the probability of not red, how we will find out not red, दो मेथड है, नॉट रेड का p ऑफ नॉट ई करेंगे, क्या करेंगे, 1 minus 3/8 probability of getting red ball plus probability not red ball equals to 1, तो क्या करेंगे, p of e plus p of not e equals to 1, so p of e 3/8 है, तो p of not e क्या हो जाएगा, इक्वल, और क्या कर सकते हैं, नॉट रेड मतलब फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, नॉट रेड मीन्स टोटल कितने हमारे रेड और ब्लैक ही हैं, रेड नहीं है तो क्या होगा, ब्लैक होंगे, इट विल बी ब्लैक ओनली 5,
This method also we can find out. Therefore probability of getting not red is 5/8. Next question. Question number 9. This is: a bag contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. So total possible outcomes क्या हो गए? 5 red marbles plus 8 white marbles plus 4 green marbles. क्या हो गया? 17. One marble is taken out of the box at random. एक marble मैंने निकाला. What is the probability? What is the probability that the marble taken out will be red? Red होने चाहिए marble. क्या probability है बताओ? So here the favorable outcomes. Red balls कितने हैं? This is red, 8 is white and this is green. Red marbles कितने? 5. So 5/17. We have to write in the sentence number of favorable outcomes by possible total number of possible outcomes. ये लिखना है डिटेल्स में. Okay. Second number, white. What is the probability of getting white? Favorable outcome is, sorry, here favorable outcome is 5. It is 5. Now probability of getting this one is 5/17. Favorable outcome क्या है? White. White कितने हैं? 8. Therefore probability of event of getting white balls is 8/17. Now number 3. What is the probability of getting not green? Not कितने हैं? What is the favorable outcomes here? Favorable outcome is not green. कितने हो गए? Green is 4. Not green 8 plus 5. Rest is 13. वैसे करके not green. Either we can do green वाले निकाल के फिर not green. That is very lengthy. So therefore probability of not green is 13/17. Okay. Next question is 10 number. Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from tank containing 5. अच्छा, total possible outcomes क्या हो गए? 5 मेल फिश हैं प्लस 8 हमारे फीमेल फिश हैं. ओके, फीमेल फिश. तो कितने हो गए? 5 + 8 कितने हो गए? 13. टोटल पॉसिबल आउटकम 31 हो गए. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश? Probability of what is the event of getting the male fish? What is the male fish का क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया बताओ पहले. मेल फिश कितने हैं? मेल इज 5 ना, मेल इज 5. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ getting male fish is 5/13 total. Okay. Next question is a game of chance consisting of spinning an arrow which comes to rest pointing. अब मैं spin करूँगी arrow तो ये rest पे आएगा. एक बार मैं round मारूँगी तो वो rest पे आएगा. What is the probability? Now what are the numbers here? Total possible outcomes कितने numbers है? Number 1 to 8 हैं. तो कितने हो गए? 8 total numbers are there. What is the probability that it will point at 8? 8 पे point होना चाहिए. तो यहाँ पर favorable outcomes कितने हो गए 8 की जगह पे? नंबर 8 एक बार ही है ना. नंबर 8 मतलब 8 नहीं लिखना. हाउ मेनी टाइम्स? कितना है? एक ही है. सो 0.8 इज 1 ओनली. देयरफॉर हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इज 1/8. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर? ऑड नंबर बताओ क्या क्या है यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स? बताओ फेवरेबल आउटकम्स ऑड नंबर्स इज 1, 3, 5 and 7. दैट इज 4 ना. Therefore probability of E is equals to 4 by total हमारे 8 हैं. That is we can cancel. That is the probability is 1/2. नंबर थर्ड में क्या है? A number greater than 2. A number should be greater than 2. Okay. एक नंबर जो greater than 2 होगा. What are the numbers? Favorable outcomes क्या क्या numbers हैं greater than 2? 3, 4, 5, 6, 7 and 8. कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 numbers are there. 8 minus 2 भी कर सकते हैं. Therefore probability is greater than 2 is 6 by 8. 2 3s are 2 4s are, that is 3 by 4. Now fourth number, what is the number is less than 9? What is the probability that the number is less than 9? क्या क्या नंबर फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या लेस देन 9? सारे हैं. एवरी नंबर 1 to 8 आर ऑल लेस देन 9, दैट इज 8 ओनली. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा मेरा? 8 by 8, that is 1. Next question is, a die is thrown once. Die is thrown once. एक बार ही थ्रो हुआ है, that is 6. टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गया? 6 हो गया. What is the probability that a prime number फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर्स. Prime numbers is 2. 2 is the smallest even prime number. 2, 3, 5. So total numbers are 3. Therefore probability of getting prime number is 3 by 6. That is 1 by 2. Now a number lying between 2 and 6, a number lying between 2 and 6. यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? क्या क्या लाए हैं नंबर? 3 है, 4 है, 5. बिटवीन में ये दोनों इट विल नॉट बी इंक्लूडेड, सो दे आर ऑल्सो 3 नंबर्स. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर हैविंग लाइंग बिटवीन दिस is 3 by 6, that is 1 by 2 only. Now an odd number, what is the favorable outcomes of odd numbers? 1, 3, 5 only. This is also 3. Therefore probability of getting odd number is 3 by 6, that is 1 by 2. Okay, rest questions in my next video.